Welcome you all in a new lecture series of transamination. So, as we know that the metabolism of amino acid, as the amino acid undergoes transamination and deamination. So, in transamination, there is only a transfer of amino group, and in deamination, there is a release of ammonia. And the ammonia which is released from the amino acid, which is utilized for the formation of urea. So here in transamination, it is a process by which the amino groups are removed from alpha amino acid and transferred to acceptor keto acid to generate amino acid version of keto acid and keto acid version of amino acid. So what is the meaning of this amino acid version of keto acid and keto acid version of amino acid? Let's discuss. Now here you can see that our alpha amino acid and the example is alanine, and here in alanine we have a amino group. This is our amino group, and this amino group it is transferred from alpha amino acid to keto acid. ये है हमारा keto acid, and ये amino group यहाँ से इस कार्बन से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. सो अगर मैंने यहाँ का अमाइनो ग्रुप निकाल दिया तो यहाँ बनेगा एलानिन का कन्वर्शन हो जाएगा पायरुवेट में. सिमिलरली ये अमाइनो ग्रुप इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट को अटैच हो गया, सो यहाँ बनेगा ग्लूटामेट. So what is a transamination? There is a transfer of amino group from alpha amino acid to keto acid. This is your keto acid or alpha ketoglutarate. सो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट में, और यहाँ का अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एलानिन ये रिमूव हो गया एंड हियर यू विल गेट अ पायरुवेट. This process is called transamination and it is a PLP dependent. What is a PLP? It is a pyridoxal phosphate, and this pyridoxal phosphate, the source of this PLP is a vitamin B6, that is a pyridoxine, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ट्रांसअमाइनेशन. ओके, नाउ देयर आर द टू सेट्स. यहाँ पे दो सेट ऑफ एंजाइम है और दो सेट ऑफ सबस्ट्रेट है. सो हमारे पास है SGPT. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGPT? दैट इज अ सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज. सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, और उसका दूसरा नाम है alanine transaminase. So here this is your alpha amino acid, it is the alanine, and here this is the alpha ketoglutarate, and here this is alpha amino acid, this is the alpha keto acid, and there is a transfer of amino group from alpha amino acid to keto acid and the conversion of this alpha ketoglutarate to glutamate, and here is the conversion of alanine to pyruvate. This process is called transamination, and the substrate here is the alanine and alpha ketoglutarate, and the product is the pyruvate and the glutamate. This is called as a transamination, and the enzyme is SGPT, that is the serum glutamate pyruvate transaminase or alanine transaminase. और ये एंजाइम है लीवर स्पेसिफिक. SGPT ये है लीवर स्पेसिफिक, और ये एंजाइम सेल्स के अंदर रहता है. दैट इज इट इज अ इंट्रासेल्युलर एंजाइम. इट इज प्रेजेंट इन अ हेपेटोसाइट, एंड दिस एंजाइम it is a required for transamination whenever there is a liver damage. जब लीवर को डैमेज होगा, so ये intracellular enzyme it will appear in a circulation. अब लीवर को डैमेज इट में बी एनी फॉर्म, जैसे कि इंजुरी, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, अल्कोहल्स की वजह से, टॉक्सिन्स के वजह से लीवर को इंजुरी हो सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ रिलीज ऑफ दिस एंजाइम इन सर्कुलेशन, and if it is elevated it means that patient is suffering from liver disease. Whenever the SGPT is elevated, it is an indicator of liver disease. Then
Next one is the SGOT, that is the serum glutamate oxaloacetate transaminase. The full form is serum glutamate oxaloacetate transaminase, और इसको हम बोल सकते हैं aspartate transaminase. एंड यहाँ पे सबस्टेट है हमारा aspartate and alpha ketoglutarate. So here the second subset is same, alpha ketoglutarate it is the same, and aspartate it is in place of alanine here we have a aspartate, and here again there is a transfer of amino group from alpha amino acid, it is from aspartate to alpha ketoglutarate. So here you can see this is the amino group, it is a transfer to this alpha ketoglutarate, and here there is a conversion of this aspartate to oxaloacetate, and here there is a keto group. Actually here should be a keto group, no यहाँ पे H नहीं चाहिए, and this is the oxaloacetate, and here you will get a glutamate, and the enzyme is Hgpt or aspartate transaminase, and this reaction is called as a transamination reaction. Okay, now you can see the substrate here. The substrate for Hgpt is alanine and alpha ketoglutarate, while for Hgot the substrate is aspartate and alpha ketoglutarate, and the product for Hgpt here pyruvate and glutamate, and here the product is oxaloacetate and glutamate. So Hgpt and Hgot here this is a pair of substrate and this is a pair of product, and for Hgot this is a aspartate and alpha ketoglutarate, this is a substrate, and the product is a oxaloacetate and glutamate, and the reaction is called as the transamination reaction, and here there is a requirement of PLP, that is a pyridoxal phosphate. And this is a new, this valine and alpha ketoglutarate, this is also a new pair, and the enzyme is valine aminotransferase. This is for your knowledge, it is not mentioned in other book, and this enzyme is a PLP, that is a pyridoxal phosphate, and here is a formation of alpha keto isovalerate. This is a keto isovalerate, and here you will get a glutamate. So have you observed that the product of this transamination is a glutamate? At the end you are getting glutamate. This is your glutamate, and this glutamate it it undergoes oxidative deamination. Okay, now what are the salient features of transamination? So first one is all transaminases requires pyridoxal phosphate, PLP हमें चाहिए ही चाहिए, and it is a coenzyme which is derived from vitamin B6. Okay, so this is the first feature. Second one is there is a no free amino group is liberated, only there is a transfer. यहाँ पे अमोनिया लिबरेट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है, एंड दैट अमाइनो ग्रुप इट इज ट्रांसफर्ड ओनली टू अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड फॉर्मेशन ऑफ glutamate. Okay, यहाँ पे all the reactions are reversible. Here you can see that all the reactions are reversible. Substrate can convert into product, and the products can again act as substrate and they can convert into product. So here all the reactions are reversible. Okay, now transamination is very important for redistribution of amino acids. So here there is a redistribution of amino acid. So if you want the non-essential amino acid, so it will comes from essential amino acid by the process of transamination. So by this technique there is a redistribution, and you will get essential amino acids. Then next one is the transamination diverts amino acid towards energy generation. As we know that during starvation we want energy, and that energy it only comes from the अमाइनो एसिड. अब यहाँ पे प्रोटीन ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन ब्रेक होने के बाद अमाइनो एसिड्स बाहर निकलते हैं, और वो अमाइनो एसिड बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस वो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज. सो एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो डाइवर्ट होते हैं एनर्जी जनरेशन में.
Then by the process of transamination to concentrate nitrogen into the glutamate, हमने देखा कि the end product of transamination is the glutamate, and glutamate it is the only amino acid that undergoes oxidative transamination. मतलब क्या है कि ट्रांसअमाइनेशन की एंड स्टेप में हमें ग्लूटामेट मिलता है, और ग्लूटामेट ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और इस स्टेप के बाद हमें अमोनिया फ्री फॉर्म में मिलता है, और ये अमोनिया हमें यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए यूज होता है. ओके. Then all the amino acids participate in a transamination reaction. जितने भी amino acids है सब participate करते हैं transamination reaction में, except glycine, proline, lysine, threonine and hydroxyproline. कौन कौन से? Glycine, proline, लाइसिन, थ्रीओनिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ये हमारा एमसीक्यू हो सकता है. एंड दिस एंजाइम, दिस अमीनो एसिड never participate in a transamination reaction. Okay. Now transamination reaction it is not restricted to alpha amino acid. ये ऐसा नहीं कि अल्फा अमीनो एसिड ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. Here the delta amino acids like ornithine can also undergo transamination. ये अल्फा अमीनो एसिड के लिए स्पेशली नहीं है, यहाँ पे डेल्टा अमीनो एसिड्स जैसे कि ऑर्निथिन, दे कैन आल्सो अंडरगो ट्रांसअमाइनेशन. ओके. Then serum transaminases are also important in diagnostic and prognostic purpose. What is the meaning of diagnostic purpose? हमें जैसे कि हमारे पास दो एंजाइम है SGPT और SGOT. तो SGPT क्या है? दिस एंजाइम इट इज एलिवेटेड इन लीवर डिसीजेस. ये लीवर के डिसीज में एलिवेट होता है. अब ये लीवर के डिसीज में एलिवेट हो गया तो हमने डायग्नोस कर लिया कि पेशेंट को लीवर डिसीज है. और अगर SGOT एलिवेट होता है इसका मतलब पेशेंट को हार्ट डिसीज है, मतलब पेशेंट के हार्ट में से ये एंजाइम बाहर निकला है व्हेनेवर देयर इज अ myocardial infarction. So in that condition, there is an increase in level of HGOT, that is for heart related condition, that is a myocardial infarction, and SGOT whenever there is a liver problem or liver infection, inflammation, damage to your hepatocyte because of some drugs, some toxin, because of alcohol, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. What is the meaning of prognostic purpose? Prognosis मतलब क्या? अगर किसी पेशेंट का अगर बोला कि पेशेंट की हालत सुधर रही है, इसका मतलब पेशेंट में ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स दिख रहा है. तो अगर पेशेंट को सपोज मायोकार्डियल इंफार्क्शन है और उसकी हालत सुधर रही है, इसका मतलब उस पेशेंट में एसजीओटी की लेवल कम हो रही है, मतलब नॉर्मल हो रही है. अगर किसी ने बोला कि उसका बैड प्रोग्नोसिस है, मतलब इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, इसका मतलब उस पेशेंट में वो एंजाइम्स है वो एलिवेटेड है. सो अगर एंजाइम्स एलिवेटेड है इसका मतलब प्रोग्नोसिस बैड है, अगर एंजाइम्स एलिवेटेड नहीं है तो इसका मतलब प्रोग्नोसिस मतलब अगर एंजाइम कम है, नॉर्मल आर हो रहा है पहले एलिवेटेड होने के बाद, इसका मतलब पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी है और पेशेंट अच्छे से रिकवर हो रहा है. Then here you can see that the specific amino acid exists in a pair. यहाँ पे अमाइनो एसिड हमेशा पेयर में ही रहते हैं, जैसे कि एलानिन अल्फा कीटोग्लूटारेट वो बनाएगा पायरुवेट एंड ग्लूटामेट. सिमिलरली एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट वो बनाएंगे ऑक्सलो एसीटेट एंड ग्लूटामेट. ठीक है, ये हमेशा पेयर्स में रहेंगे, यहाँ इनका पेयर कभी भी चेंज नहीं होगा. So what is the site of transamination? So mainly it occurs in your liver, liver में होगा, kidney में होगा, heart में होगा and brain में होगा. These are the common site of transamination. But the enzymes are present in almost all the mammalian tissue. हमारे सारे mammalian tissue में ये enzyme available है, and transamination can be carried out in all tissue to some extent. But these are our prime site: liver, kidney, heart and brain, जहाँ पे transamination होता है. Okay. Now what is the mechanism of transamination? Transamination का mechanism क्या है? So here there is a transfer of amino group. अभी जो हमारा amino group है ये ट्रांसफर होता है इस
पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट को। पाइरिडॉक्सिल मतलब यहाँ पे है CHO ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब ये अमाइनो ग्रुप क्या करेगा, ये सॉरी ये अल्डिहाइड ग्रुप क्या करेगा, ये अमाइनो ग्रुप को ले लेगा और ये बन जाएगा पाइरिडॉक्सामाइन। पाइरिडॉक्सिल था, ये बन गया पाइरिडॉक्सामाइन, एंड हियर यू विल गेट अ पाइरुवेट। अभी हमें वंस अगेन यहाँ पे पाइरुवेट है, यहाँ पे इस जगह पे हमें यहाँ पे चाहिए ऑक्सीजन और यहाँ पे आना चाहिए डबल बॉन्ड, सो दिस इज योर pyruvate, and here now there is a transfer of amino group from this alanine to this pyridoxal phosphate। pyridoxal phosphate ने amino group ले लिया, this is your pyridoxamine phosphate, और यहाँ का जो amino group है वो निकल गया, तो यहाँ पे बन गया pyruvate। Now this amino group from pyridoxamine, it is transferred to this alpha ketoglutarate। इस अल्फा कीटोग्लूटारेट को ये वाला अमाइनो ग्रुप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, लेकिन कैसे हुआ, डायरेक्टली नहीं हुआ, इट इज थ्रू द pyridoxal phosphate। So here you have a amino group which is attached to the अल्फा कीटोग्लूटारेट थ्रू pyridoxamine phosphate। तो इसका ये अमाइनो ग्रुप जो है यहाँ से ये यहाँ आ गया इन इनडायरेक्ट मैनर, और यहाँ पे अभी अल्फा कीटोग्लूटारेट ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। सो यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप आ गया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसअमाइनेशन, एंड द मैकेनिज्म हियर देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ pyridoxal phosphate। ओके, नाउ so what is the mechanism of transamination? So mechanism, it is a big detail, but here you can see this is a short version. It is a ping pong by my mechanism. Here you can see that the enzyme combines with the substrate, and here is the enzyme substrate complex, and is a production of product। मतलब क्या कि aspartate है, aspartate से अमाइनो ग्रुप कहाँ ट्रांसफर हो गया, हमारा ने देखा था कि PLP को ट्रांसफर हो गया था, और यहाँ पे PLP से यहाँ पे हमारा ऑक्सलो एसीटेट बाहर निकल गया था और पायरुवेट बाहर निकल गया था। अगर एस्पार्टेट रहा तो ऑक्सलो एसीटेट और एलिन रहा तो पायरुवेट। Then this enzyme, that is a coenzyme which carries our amino group। अब ये amino group it will transfer to the second subset, यानी here it is a alpha ketoglutarate, and here the second subset reacts with the enzyme, this is the enzyme substrate complex, and here there is a release of product to this glutamate, there is the amino group is gained। So here you can see that key, here there is a two subset are not simultaneously reacting with the enzyme. First, the first substrate enters in the reaction, and here there is a release of product. Then second substrate enter in reaction, and there is a release of product. So there are the substrate and products are two substrate are, they are not simultaneously participating, they are participating in reaction separately, and this mechanism is called as a ping pong bye-bye mechanism। We will discuss this ping pong bye-bye mechanism in a detail in a next lecture। Now here you can see that we have a Hgpt, that is a serum glutamate pyruvate transaminase, and here this Hgpt, it is a liver specific। Whenever there is a damage to liver, this enzyme is elevated। Whenever there is a liver damage, whenever there is an infection, whenever there is an inflammation, whenever there is a drug induced damage, alcohol induced damage, तो क्या होता है, there is a release of this intracellular enzyme, as this enzyme is present in the hepatocytes whenever there is a damage to liver because of infection, because of inflammation, because of drugs, that drugs can damage that hepatocyte, and this alcohol it also responsible for damaging your hepatocyte। So in this condition, there is a post elevation of Hgpt and Hgot। इस कंडीशन में Hgpt भी बढ़ता है और Hgot भी बढ़ता है, but the concentration of Hgpt it is a more as compared to Hgot। That's why in the patient, if he is suffering from liver damage, there is an increase in the level of Hgpt। Similarly,
if the patient is suffering from myocardial infarction or whenever there is a damage to your heart. So here there is a release of the enzyme that is the SGOT, that is the serum glutamate oxaloacetate transaminase. तो ये एंजाइम हार्ट से सर्कुलेशन में आएगा and this is a heart specific enzyme and it is a SGOT is and Hgpt both are elevated, but the concentration of Hgot it is a more than Hgpt. It means that patient को heart damage है. Okay, so this is a practical topic and we will discuss this topic separately in a practical also. This is about SGPT, SGOT and transamination reaction. Okay, thank you. Okay, now this is the end of this lecture. Please like, share and subscribe.